Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to Chase Academy and a very warm welcome to English grade 9. Students, आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे जो हमारा SLO है that is based on the competency of writing. यानी ये राइटिंग का SLO है. वैसे जनरली आफ्टर रीडिंग SLOs हम ओरल को कवर करते हैं बट वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा पार्टिसिपेशन ताकि स्टूडेंट्स एक्टिव हों और उन्हें पहले एक दिन बता दिया जाए ताकि वो नेक्स्ट डे ओरल कम्युनिकेशन के SLOs को प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो ये जो हमारा SLO है लेक्चर 9 है, ये हमारा राइटिंग का SLO है अबाउट बुक रिव्यू. So we have two SLOs over here. First one says examine. ये हमारा कीवर्ड है, एक्शन वर्ड है. हमने क्या करना है? एग्जामिन करना है the mechanics of developing a book review report. Book review report हमने लिखनी है, उसको एक शेप देनी है, उसे डेवलप करना है. But it is not just simple. You need to understand how a book review report is written. It is not just like your essay या paragraph, but it is a little technical and mechanical. You have to follow a certain pattern, you have to follow a certain format of developing a book review report. So, and next is after we learn about these mechanics of developing a book review report, then we are going to write a book review report. So these two SLOs are interconnected. Now students, a very important question is, why should we learn to write or develop a book review report? We are not critics, we are not authors, we are not actually professional writers. So why do we need to write a book review report? Right? It's a very important question. Now students, जब भी हम कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे हमने कल एक स्टोरी देखी प्रिंसेस सितंबर, वो उस स्टोरी का कंसाइज वर्जन था. दैट इज एक्चुअली अ बिग स्टोरी. ठीक है, हमने उसको कंसाइज करके बुक में डाला था because due to the limitations that we had. Now if you read any of these stories, like if you read a short novel Animal Farm, या आप C.S. Lewis या लुइस कैरल के नॉवेल्स पढ़ते हैं, या एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, इस तरह के चिल्ड्रन नॉवेल्स, या आपकी एज के और आपकी ग्रेड लेवल के मुताबिक जो चिल्ड्रन एडल्ट लिटरेचर है, ठीक है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें रिटेन करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, ठीक है, और उसको एक जगह सेव करें और दूसरों को बताएं. ठीक है, अपने ख्यालात का इजहार करें. कैसे करेंगे? बाय डेवलपिंग अ बुक रिव्यू रिपोर्ट. नाउ दिस कैन बी डन फॉर बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स. यानी कोई बायोग्राफी पे भी आप बुक रिव्यू रिपोर्ट लिख सकते हैं. ठीक है, किसी मेमोआर पे, आप किसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की जो बुक है उसके ऊपर लिख सकते हैं, आप एक शॉर्ट नॉवल के ऊपर या फुल फ्लेज्ड नॉवल के ऊपर. फिक्शन, चाहे वो फैंटेसी फिक्शन है, हिस्टोरिकल है, किसी भी टाइप की फिक्शन है, आप उसको पढ़ते हैं, totally you understand the theme, the characters, the setting and everything, and then you develop a book review. यानी आप उस पूरी बुक का एक रिव्यू दे रहे हैं as a reader in a very short way. Book reviews are short, they are crispy, they are very precise. Alright, तो हम इसे रिपोर्ट भी कह सकते हैं, हम इसे बुक रिव्यू भी कहते हैं, बुक रिव्यू रिपोर्ट भी कह सकते हैं, और हमने ये रिपोर्ट बनानी है. ठीक है, ये हमारा SLO है. व्हाई डू वी मेक इट? ताकि हम उसको रेट भी करते हैं एज रीडर्स, हम उसे रेटिंग भी दे सकते हैं. 1 आउट from the scale of 1 to 10 or from the scale of 5 stars, you can rate the book. I give this book 3 stars. I like this thing, I like the plot, I don't like this character, I have not understood the theme quite well. या मुझे ये, आपको एज अ रीडर उस चीज ने क्या इफेक्ट किया, आप उस बुक रिव्यू report में लिखेंगे, and then you can publish the book review report in different magazines, you can publish it in different newspapers by your name, and in this way people can learn a lot from you. लोग आपसे सीखेंगे. whether you recommend the book or not, क्या आप उस बुक को recommend करते हैं, क्या आपके मुताबिक इस किताब
से कितना फायदा हुआ, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, या इस थीम पे आप कोई और किताब पढ़ लें, ठीक है, आपका क्या एनालिसिस है। सो दिस मेक्स यू अ बेटर रीडर, दिस मेक्स यू एन एक्सक्लूसिव एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रीडर, जो कि रिस्पॉन्ड भी करता है जो भी आप पढ़ते हैं। इस तरह आपको वो चीज ज्यादा से ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, क्योंकि आपने बुक रिव्यू रिपोर्ट लिखी थी, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप ज्यादा उसको ज्यादा देर तक उसको रिटेन करें और रिकॉल कर सकें। व्हाट इज अ बुक रिव्यू और बुक रिव्यू रिपोर्ट? अ बुक रिव्यू is a written or spoken evaluation of a book. All right. Now, you can give the review of a book in oral. For example, if I start talking about a book that I have read, for example, To Kill a Mockingbird, I have read it not recently, but I read it 3 years ago, and I remember each and everything because I have written a review on it. All right. So now this can be done in the oral medium, in the spoken medium, and also in the written format. जब हम written format में बात करेंगे, then we will follow a certain pattern. Now, what do you find in a book review? Provide insights. किताब के अंदर क्या insights है, क्या information है, ये इस किताब में क्या मौजूद है, इसके अंदर की जो कहानी है उसके बारे में, ओपिनियंस, आपका इस किताब के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या टेक है, आप जो है वो क्या तासुरात रखते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, you critically analyze the book. It can be a story, it can be a non-fiction, all right, non-fiction text. So you critically analyze. You know what is an analysis? आप किताब को पढ़ते हैं और उसके बारे में इजहार करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर पे, उसके सेंटेंसेस पे, उसकी डिवीजन पे, उसकी इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं, क्या ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनालिसिस। आप उसका तज्जिया करते हैं, एनालाइज करते हैं उसे। ऑलराइट, it aims to help others decide whether they want to read the book and offers the reviewers perspectives on its strengths and weaknesses. Now students, we know that books are of different categories, बहुत सारे different genres मौजूद हैं books के। Now we don't have time to read all the books in the world, we just have, you know, we don't have so many lives, तो हम क्या करते हैं, we carefully select a book, decide whether to read it or not, and then we read the whole book, and it can take a month, it can take few weeks or even some days. So it means बहुत सोच के हमने डिसाइड करना होता है कि हम इस किताब को लेके पढ़ें, इसको खरीदें, पढ़ें या ना पढ़ें। तो आपके बुक रिव्यू रिपोर्ट से क्या होता है कि जो दूसरे रीडर्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि ये किताब जो है वो पढ़ने की है मेरे टेस्ट के मुताबिक, या मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, या मेरे फील्ड के मुताबिक है या नहीं है, वैसे पढ़ूं या ना पढ़ूं। या अगर मेरे पास टाइम नहीं है पूरी स्टोरी को पढ़ने का, पूरी बुक को पढ़ने का, तो मैं एक रिव्यू पढ़ के और डिफरेंट रिव्यूज पढ़ के एक आइडिया ले सकता हूं कि इस किताब में समरी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है और इसके अंदर क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो ये मकसद है बुक रिव्यू लिखने का। एंड इट हेल्प्स अदर्स, एंड यू ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बुक। किताब में क्या अच्छी बातें हैं, स्ट्रेंथ क्या है किताब की, उसकी गुड पॉइंट्स, एंड द वीकनेसेस, द बैड पॉइंट्स। एंड इन keeping all these things considered and keeping all these things in mind, you can clearly decide whether you want to rate the book, how do you want to rate the book, and whether you want to read it or not. So all right, here this is an example book review. All right, and in your book review report you can add pictures, you can add quotes, जो quotations होते हैं ना different characters के, कुछ अच्छी बातें होती है, valuable life lessons, quotations, you can add that up in your book review. You can add pictures, you can make it beautiful, crafty, colorful, design it, and you can make it stylish. The following is an example of book review. The book is If I Never Forever Endeavor. All right, If I Never Forever Endeavor. इसमें एक alliteration भी पाई जाती है, देखें sounds जो है repeat हो रही है. So the title says that it is, now the title is very you know,
it's very you can say that it's having a very sound and very good quality. This gives us an idea that the book is going to be in that kind of rhythm and in that kind of form. ये किसने रिव्यू किया है? You can also write your name if you have reviewed a book. Review by Hayden, Southeast Michigan, Mensa. All right, you can say, let's say Muhammad from Lahore, Pakistan. Review by Aman from Lahore, Pakistan. That's all. Now book review start ho raha hai. As you can see, the writer has also added a picture. You can add different pictures. This book was about a bird. अब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है what the book is about. From the title cover, from the main cover, we can see that, all right, this is about maybe a bird. This is about maybe its life, its freedom, जो भी है. This book was about a bird who didn't yet know how to fly. एक ऐसे bird के बारे में है जो कि अभी उड़ना नहीं जानता. The bird has to decide if it will try to fly, but it is not sure if it wants to. अब वो उसी कश्मकश में है कि मैं फ्लाई करूं, मैं उड़ूं या ना उड़ूं, अगर गिर गया तो ठीक है, क्या डिसाइड करूं, क्या मैं उड़ना चाहता हूं या नहीं उड़ना चाहता. Alright? The bird thought, if I never forever endeavor, then I won't ever learn. कि अगर मैं कभी भी स्टेप नहीं लूंगा, कभी भी कोशिश नहीं करूंगा तो सीखूंगा भी नहीं, और आगे जाके सीखने की जरूरत महसूस हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है. Then on one wing he worries he might fail, and on the other wing he thinks of how he may succeed. He worries that if he tries he may get lost in the world. That makes him want to stay in his nest where he's safe. He says, I would rather stay in my nest than go in the world and face any kind of problems. Alright, कि मैं बाहर ही ना निकलूं, प्रॉब्लम्स ही ना फेस करूं, मैं चुप करके अपने नेस्ट में रह जाऊं. तो यहां पे ऑथर आपको क्या बता रहा है? The whole crux, the idea of the whole story. This book would help other children to learn that trying new things can be scary. इस किताब क्या क्या crux है? What is the main idea? That whenever we decide to try something new, we are afraid. Oh no, अगर फेल हो गया, अगर ये नहीं चला तो रिस्क नहीं ले सकते हम, right? But we should try. All right? This is the main message. When we try, we can find things that make us happy too. जब हम try करेंगे, हम कामयाब होंगे, हमें खुशी मिलेगी. And this book will help others know that mistakes are okay and part of learning. So आपने देखा ये बार बार वर्ड्स आ रहे हैं, this book, ये किताब, क्योंकि हम इसी किताब के बारे में बात करें. My favorite part is, अब यहां पे आप भी अपना फेवरेट पार्ट जो हमारी स्टोरी है प्रिंसेस सितंबर, उसको पूरा पढ़ने के बाद बता सकते हैं व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट. एंड यस, अ क्वेश्चन हियर, क्या बुक रिव्यूज ऑब्जेक्टिव होने चाहिए या सब्जेक्टिव? यानी बुक रिव्यूज में आपके ओपिनियंस होने चाहिए या बस आपने एक रिपोर्ट बनानी है? इट कैन बी सब्जेक्टिव. जैसे हम सब्जेक्टिव समरी लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव समरी लिखते हैं. मोस्टली द समरीज आर written in the subjective form. All right, this is the favorite part. और इसी तरह now थोड़ा सा है, हम इसे कर ही लेते हैं. My favorite part is that the bird tried and learned that she could fly. Favorite part ये है कि उसने कोशिश की और कामयाबी हासिल की. I also like that I read this book because it gave me a chance to talk to mom about making mistakes and how I don't like making them. So इसके वजह से इसको मौका मिला कि वो अपनी मदर से बात कर सके, अपने कुछ इश्यूज को डील कर सके. So it means then I learned they are good and part of learning. Boys and girls who are 3 to 8 years old would like this book. अब उसने बता दिया कि ऑडियंस कौन सी है बुक की, कौन ये लोग, किस ऑडियंस के लिए ये किताब है. Alright, because it teaches about trying a new thing and how it's important to get past being scared so you can learn new things. Now, time for the rating. How much do you rate the book? I give the book 5 stars since I think it is important for other children to learn about courage, to learn about having the guts to take risk, having the courage to take risk, go out and try new things and learn new things. So, आपने देखा यहाँ पे, this is how a book review is written. कि स्टोरी क्या है, मेन आइडिया क्या है, मुझे इस किताब में क्या अच्छा लगा, ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए, किन लोगों के लिए है, मैंने उससे क्या सीखा और मैं उसको
किस तरह रेट करता हो। इसी तरह आपने प्रिंसेस सितंबर की स्टोरी को सब्जेक्टिवली खुद do not copy, do not take help from each other, do not even share, just write a book review report and then you can exchange to read about them। ठीक है, उसके बाद आप exchange करें, आपस में पढ़ें and you can discuss। now how to write a book review। पहले introduction, start with a captivating introduction that includes the book, the title, the book title को जिक्र करेंगे हम अपने introduction में, ऑथर को जिक्र करेंगे एंड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्लॉट और मेन थीम। तो हमारे पहले पैराग्राफ में, पहले पार्ट में बुक का टाइटल, उस टाइटल से आपका क्या मतलब है, ठीक है, आपने उस टाइटल से क्या अखज किया, ऑथर कौन है, लाइक हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसेस सितंबर स्टोरी, विलियम समरसेट मॉहम उसका नाम है, ही इज द राइटर ऑफ दैट स्टोरी। ऑलराइट, उसके बाद यू प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी, अ लिटिल, अ वेरी ब्रीफ, बहुत थोड़े सेंटेंसेस में आप उसकी समरी को बता दें। जैसे हमने कल बात की थी that there is a king and a queen and their daughters and all of them are gifted birds but one of them the September's one died and then she got birth, और उसके बाद एंड में बस, this is the summary of the whole book in a very short way। express your opinions, clearly express your opinion about the book or about the novel or about the story। mention what you liked or disliked। is there anything that you don't like about the story Princess September? talk about it, बात करें उसके बारे में। this is what I don't like, this is what I feel it is unrealistic, ऐसा नहीं हो सकता कि लेकिन कि ये जो है ये तो गलत उसने किया या उस कैरेक्टर ने गलत किया। आप हर चीज जो है मेंशन कर सकते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस के अंदर आप कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, थीम को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे उसके बाद कि राइटिंग स्टाइल कैसा था, इट इज डिफिकल्ट टू रीड और इज इट इजी टू रीड। बुक्स कई किस्म की होती हैं ना, कुछ आसानी से पढ़ी जाती हैं ड्यू टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सम बुक्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। बार बार एक पैसेज पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है अच्छा ये बात हो रही है। टॉक अबाउट द राइटिंग स्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल डज द बुक हैव। सो introduction, summary, opinions, analysis of the characters, exploration of the theme, and then the writing style of that book। compare and contrast if applicable, only if applicable, compare the book to others in the same genre। for example, if you're reading a book and suddenly you have an idea, ये तो उस किताब में भी इस तरह का, या मैंने ऐसी वो स्टोरी पढ़ी थी, and you can compare सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, तो कोट्स के बारे में कि आप बुक के कोई कोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मेंशन करके कि इस कैरेक्टर ने ये बात की थी, आई लाइक्ड इट। ऑलराइट, एंड पैसेजेस, फेवरेट पैसेजेस भी आप कोट कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज माय फेवरेट पैसेज ऑफ ऑल द डिफरेंट पैसेजेस और पैराग्राफ्स इन द बुक। recommendation, clearly state whether you would recommend this book for others or not। all right, so if you really like it, obviously you will say everybody should read it, why not? And then conclusion, summarize your main points and restate your overall opinion
conclude with a strong statement that leaves a lasting impression. आखिर में कोई ऐसी अच्छी strong बात करें. For example, you can say that freedom is not only for human beings but animals do also want that. So इस तरह की कोई strong statement, and this is how you end your book review report. And then you can give your rating. I rate this book 1.5 stars out of 5 stars, or 3 stars out of 5 stars. So, for example, if you're reading a non-fiction book, all right, this is the way that you write a non-fiction. यहाँ पे आप book का title लिख देंगे, author कौन है, इस बुक के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन है, एनिमल्स के बारे में है, स्पेस के बारे में है, समंदर के बारे में है, या एनी डिजास्टर, नेचुरल फिनोमेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस बारे में भी वो किताब है. You can make a diagram or paste a diagram over here. Remember to write facts in your own words. जो भी facts हैं उसको आप लिखें और पेज भी मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है. You can get this in the, you can take a print of this and then you can read anything in. और यहाँ पे आप अपना ओपिनियन, और अगर आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं इसे, ठीक है, आप खुद भी अगर डिजाइन कर सकते हैं तो अपना बुक रिव्यू का लेआउट जो है वो डिजाइन करें. अगर फिक्शन स्टोरी है तो ऑब्वियसली उसमें प्लॉट का जिक्र होगा, बुक टाइटल, ऑथर, ये तो लाजमी है. प्लॉट का जिक्र होगा, मेन कैरेक्टर्स कौन थे, अपने फेवरेट कैरेक्टर की पिक्चर ड्रॉ करें, या ड्रॉ करना तो बहुत छोटे लेवल पे बच्चों के लिए आ जाता है, आप पेस्ट कर सकते हैं. फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी आप रिकमेंड करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों और क्यों नहीं, इस तरह की सारी चीजें आप अपने बुक रिव्यू रिपोर्ट में. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब आपने बुक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अब देखें, यू आर गोइंग टू रीड द स्टोरी प्रिंसेस सितंबर कंप्लीटली, और उसके बाद आप बुक रिव्यू रिपोर्ट लिखेंगे, एंड दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिकली यूज योर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम ओवर हियर. नेक्स्ट. ऑलराइट, तो ये आपके साथ एक शेयर कर दिया गया, आप इसका प्रिंट लें और यू कैन सी दैट you can write a book review over here. All right, so this was all about today's lecture, students. I hope that आप लोगों ने SLO को समझ लिया है. It's a very important skill to be able to write book reviews. They will help you in your life and you will be good writers and good readers of the English literature. Thank you so much. I'll see you tomorrow and we will do an oral communication SLO. तो उसके लिए आप तैयारी करके आइएगा, and inshallah we will have a great time and we will learn a lot. Thank you so much. Allah Hafiz.